Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back in lecture number 17. Today we are going to discuss the second part of our chapter we discussed in the last lecture. It was about short-term financing. And before we discuss the next topics of this chapter, let's have a look what did we studied in our previous lecture. So in our previous lecture, we covered the topics about sources and types of spontaneous financing. Spontaneous financing, how it occurs and why we call it spontaneous, because it occurs naturally. These financing, they are created naturally because of the business operations. जो भी suppliers के से supplies जो firm procure करती है, जो purchase की जाती हैं, उनके against जो क्रेडिट लाइबिलिटीज़ या अकाउंट्स पेएबल क्रिएट होते हैं और उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड हैं, फॉर एग्जांपल द क्रेडिट टर्म, उसमें अगर नेट 30 डेज़ है या कोई डिस्काउंट ऑफर्ड है तो वो फॉर दैट टाइम पीरियड जो अकाउंट्स पेएबल में बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग. एंड देन वी कैलकुलेटेड द एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट व्हेन ट्रेड डिस्काउंट्स आर फॉरगॉन. अगर ट्रेड डिस्काउंट्स को अवेल नहीं किया जाता तो हाउ मच कास्ट द फर्म हैज़ टू पे. अगर जो फर्म की कंडीशन है फॉर एग्जांपल 2 10 नेट 30, तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर फर्म उस डिस्काउंट को अवेल नहीं करती बाय मेकिंग द पेमेंट, तो उसके अगेंस्ट उसको कितनी कास्ट पे करना पड़ती है. आई मीन कि जो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए वो जो बैलेंस फर्म यूज़ करती है उसके अगेंस्ट उसका कास्ट की जो इफ़ेक्टिव एनुअल कास्ट है वो हमने डिटरमिन की. उसके अलावा स्ट्रेचिंग पेएबल्स एंड इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स. फर्म ने अपने पेएबल को जो स्ट्रेच किया मोर देन द टाइम व्हेन इट वाज ड्यू. फॉर एग्जांपल अगर इट वाज द पेएबल्स दे वर ड्यू ऑन 30th डे, तो उसको अगर फर्म स्ट्रेच करती है फॉर एनी नंबर ऑफ़ डेज़ बियॉन्ड दोज लिमिटेड नंबर ऑफ़ 30 डेज़, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके साथ फर्म क्या एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग अरेंज कर सकती है रिस्क फ्री फाइनेंसिंग के लिए. उसमें फर्म का अपने सप्लायर के साथ एक बहुत इस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टवर्दी लिंक होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा वी डिस्क्राइब्ड वेरियस टाइप्स ऑफ निगोशिएटेड और एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म बोरोइंग. और हम इसी टॉपिक को विच इज़ मेंशन इन द लास्ट, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. उसमें हमने लाइन ऑफ क्रेडिट को डिस्कस किया था, उसमें हमने रिवॉल्विंग क्रेडिट उसको डिस्कस किया था, ट्रांजैक्शनल क्रेडिट को डिस्कस किया था. और इस पार्ट में ऑफ आवर दिस सेकंड पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, उसका जो निगोशिएटेड पार्ट है, आई मीन द सिक्योर्ड पार्ट ऑफ निगोशिएटेड फाइनेंसिंग, हम उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कम टू द today's lecture. It is the second part of our chapter number 11. It is about short term financing, and the learning outcomes, I will repeat the same for this whole chapter. After studying this chapter, you will be able to understand the sources and types of spontaneous financing, that is the accounts payable and the accrued liabilities in the form of taxes, wages, interest and dividends. And also you will be able to calculate the annual cost of trade credit when trade discount are foregone, and you will be able to explain what is meant by stretching payables and understand its potential drawbacks. And you will be able to describe various types of negotiated or external short-term borrowing. इसमें secured and unsecured loans, they will be covered both. And do remember कि हमने unsecured part जो है उसको पिछले लेक्चर में कवर किया था, and the secured loans we will be discussing in our today's lecture. And also you will be able to calculate the effective annual interest rate on short-term borrowing with or without a compensating balance. The balance, compensating balance, जिसको जैसा कि आपको पता है, the minimum balance the banks or financial institutions they require the firm to be maintained with them. And also the commitment fee in case of revolving credits, जो remaining balance है जिसको firm ने अभी तक avail नहीं किया in the form of loan or in the form of financing, so that remaining balance is still available for the bank, for the firm at any time.
तो उसको जो उसकी जो रिजर्व करने के लिए उसको जो फ़ी पे करना पड़ेगी, दैट इज़ वी कॉल इट एज अ कमिटमेंट फ़ी. And also you will be able to understand what is meant by factoring accounts receivable. अब इसमें factoring accounts receivable इस टॉपिक को भी हम टच करेंगे. इट मीन्स इसको हमने पिछले किसी लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि when the firm they sell their accounts receivable or they take financing or they go for financing against these accounts receivable, so that is called factoring accounts receivables. Now हमने अनसिक्योर्ड लोन्स को डिस्कस किया था कि इट इज़ अवेलेबल फॉर द ट्रस्टवर्दी एंड द कॉरपोरेशंस आर द फर्म्स विद सम हाई क्रेडिट रेटिंग, whereas the secured loans they are for the firms which don't have good repute or good credit rating or good past history, or their size is not good enough, the risk is attached there. So in that case suppliers of finance would be seeking certain securities. So these loans or this financing, it comes with some security. It may be in the form of a collateral, it may be in the form of a pledge against certain assets, in the form of inventories, accounts receivables. So we will be covering this type of topics in our today's lecture. So before we go into that topic, let's have a detour and we look into some terms that we use in the cost of borrowing. So this topic, detour, cost of borrowing, it is actually we take ourselves away from our topic, and before that we discuss the few variables or few important terms or the cost what we will be using in our later discussion. So we are going to discuss the interest rate in this topic, and also prime rate. And what is interest rate and prime rate? Actually interest rate covers different cushions or different risks for the financial institution or for the bank who are forwarding such loans. उसमें डिफरेंट रिस्क जो हैं वो कवर किए जाते हैं, और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है दैट इज़ लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या कराची इंटरबैंक ऑफर रेट इन केस ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स. तो बैंक जो है इस रेट के ऊपर फॉर एग्जांपल लाइबोर प्लस एनी परसेंटेज ऑफ मार्कअप जो है वो चार्ज करते हैं फॉर फाइनेंसिंग. और पाकिस्तान के केस में बैंक्स जो हैं वो क्लाइंट्स से कराची इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस एनी परसेंटेज ऑफ मार्कअप मे बी 2%, 3% और बेस्ड ऑन द कंपटीशन इन द मार्केट वो एक प्लस मार्कअप रेट जो है वो चार्ज करते हैं क्लाइंट से. सो नाउ इन द इंटरेस्ट रेट there comes prime rate. So prime rate is a short-term interest rate charged by banks to large credit-worthy customers. The rate is determined through negotiation between the lender and the borrower. अब जो large corporations हैं, जो trustworthy corporations हैं, they can borrow funds at a lesser cost than the normal or any other firm, any smaller firm. And what is the prime rate? It is, as we mentioned earlier, it's a short-term interest rate charged by banks to large credit-worthy customers because of high competition for commercial paper market. The well-established firm are able to borrow at a lower than the prime rate. अब जो well-established firm हैं, जो large corporations हैं, they are even capable of borrowing funds at a rate lower than the prime rate. अब जो prime rate है, that is not for all, that is only for the large corporations, for the trustworthy businesses. अब जो बड़ी corporations हैं, they can even arrange finances at a rate lower than the prime rate. अब वो किस तरह से arrange कर सकती हैं? They can issue by themselves some commercial papers into the market, and they can arrange financing at a lower rate than the banks or any other financial institution. And the rate charged depends upon the marginal cost of funds, लाइबोर प्लस एन इंटरेस्ट रेट मार्जिन. अब बैंक्स ने जो फंड्स फॉरवर्ड करने हैं फॉर द फाइनेंसिंग पर्पस ऑफ डिफरेंट फर्म्स, अब बैंक को वो जो फंड्स हैं दे कम एट अ कास्ट. अब बैंक की जो अपनी कास्ट है दे विल ऐड अ प्रॉफिट रेट इनटू ऑन टू दैट, एंड देन दे विल फॉरवर्ड सच लोन्स. सो मोस्टली एज आई मेंशन्ड द रेट इज लाइबोर प्लस एन इंटरेस्ट रेट मार्जिन which will add to the earnings of the financial institution. And then differential from prime rate depends on, अब prime rate से जो rate vary करेगा it will depend on the following factors, कि
एक तो लार्ज कारपोरेशन के लिए जो रेट ऑफर किया जाएगा, ट्रस्ट वर्दी कारपोरेशन के लिए जो रेट ऑफर किया जाएगा, दैट वी नो एज अ प्राइम रेट और सिंपली प्राइम। अब उसमें जो ऐड किया जाएगा रेट फॉर एनी फर्म, इट विल डिपेंड ऑन द कैश बैलेंसेस मेंटेन्ड विद द बैंक। अब जो फर्म जिसके लिए प्राइम प्लस यानी रेट चार्ज किया जाएगा वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैश बैलेंसेस मेंटेन्ड विद द सेम बैंक। अगर एक फर्म का किसी बैंक के साथ कोई अकाउंट चल रहा है, उसमें कितना बैलेंस अवेलेबल है एट एनी टाइम, या उसमें कोई कंडीशंस है फॉर दैट मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, तो उस हिसाब से प्राइम रेट जो है वो डिटरमिन किया जाएगा। इट विल बी नेगोशिएटेड बिटवीन द बैंक एंड द फर्म for the final settlement of that rate and also other business with the bank। उसके अलावा फर्म जो है उसका उस बैंक के साथ क्या बिजनेस है। फॉर एग्जांपल जब हमने लास्ट चैप्टर में इनफैक्ट अकाउंट्स रिसीवेबल की हैंडलिंग का जिक्र किया था, तो इन दैट केस banks they provide services to collect the accounts receivables on behalf of firms। तो फर्म की उस बैंक के साथ क्या डीलिंग है, that will also have an impact on the rate and also cost of servicing the loan। और उसके साथ बैंक जो है उसकी एक्स्ट्रा कास्ट क्या अटैच होंगी इन दिस पर्टिकुलर लोन विद द फर्म, that will also determine the final rate that will be charged for the financing। and कंप्यूटिंग इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि फॉर अ लोन ऑफ सपोज $100,000 इफ द रेट इज 10%, इट इज द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज $10,000। लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स और कंडीशंस होंगी इन्वॉल्व, उसकी बेस पे जो इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दैट कैन वेरी। So for example, there are different conditions, that is one we call as collect basis and the other one we call it discount basis। So in case of collect basis, interest is paid at the maturity of the note। जो financing time period है उसके end पे interest पे किया जाएगा along with the principal amount borrowed। Whereas in case of discount basis, जो firm को फाइनेंसिंग फॉरवर्ड की जाएगी फ्रॉम द बैंक, अगर वो है $100,000 की, तो आउट ऑफ दैट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो इंटरेस्ट जो है वो पहले से निकाल लिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जो हमने इस एग्जांपल में सपोज किया है कि अगर बैलेंस इज $100,000 इज अरेंज्ड इन फाइनेंसिंग, तो 10% अगर इंटरेस्ट रेट है तो दैट 10% विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द 100,000 एंड देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू द फर्म। सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट बेसिस। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशंस। हाउ डू वी मेक आवर कैलकुलेशंस on collect basis? In this example here, a loan balance is $100,000 and the interest rate is 10% for 1 year. So what is the effective rate of interest? So it is quite simple. At the end of the period, interest will be paid along with the principal amount. So the rate of interest can be calculated, the interest expense divided by the usable fund. So you can calculate it equal to 10%. But what will happen in case of the transaction that take place on discount basis? So here the interest is deducted from the initial loan. Let's suppose the same example for a loan of $100,000 at a interest rate of 10% and the condition is discount basis. So here the interest charged is $10,000, लेकिन इसको डिडक्ट किया गया है at the time of forwarding the funds. So here you see out of a loan of $100,000, 10,000 interest has been deducted right away. So we have a balance of $90,000 for the whole 1 year. अब हमने कैलकुलेशन हमने किस बेस पे करनी है कि जो बैलेंस हमें अवेलेबल है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया गया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे किया गया $10,000। अब एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने पे क्या करना है $100,000। इट विल कवर द अमाउंट of fund used during the whole year
प्लस द इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज़ पेड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो अब इंटरेस्ट है $10,000 और द प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन यूज्ड ड्यूरिंग द होल ईयर इट इज़ $90,000। अब इसमें इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 11.11%। सो यू सी द सेम वॉल्यूम ऑफ loan carries different interest rate, effective interest rate, given the different terms and condition. And the what happens if there is a condition to maintain a compensating balance as well? So in that case, what is the effective interest rate? So let's look into that. So as you know, compensating balance is a demand deposit maintained by a firm to compensate a bank for services provided, credit lines or loans. Size of the balance depends upon the credibility of the firm. And then अब compensating balance में कितना deposit maintain किया जाएगा, that again would depend on the credibility of the firm, the size of the firm and the trustworthiness or the creditworthiness of the firm. So let's suppose an example here. For a loan of $1 million at a rate of 10%, for 1 year with the required $150,000 compensating balance, what will be the effective annual interest rate? So we can see here that total interest expense क्या होगा against this $1 million. That will be 10% will make $100,000 in interest for 1 year, और उसके अगेंस्ट कितना बैलेंस जो है वो बैंक को फर्म को मिला, दैट इज द $850,000 एज अ यूजेबल फंड। ये 850,000 कैसे मिला कि फॉर अ लोन ऑफ 1 million देयर इज अ कंपनसेटिंग बैलेंस इक्वल टू 150,000। ये वो बैलेंस है जो बैंक के अकाउंट में मेंटेन रहेगा एंड इट विल नॉट बी फॉरवर्डेड टू द फर्म फॉर देयर ऑपरेशंस। सो इफेक्टिवली फर्म ने कितना फंड बारो किया? इट इज इक्वल टू $850,000। So the effective interest rate will be calculated based on these figures, the interest amount paid and the funds used. So you can see here, instead of 10%, firm is effectively paying 11.76%. So this is because of this interest rate variation is because of the collect basis, discount basis and compensating balance basis. And also the commitment fee. As I mentioned before, in case of revolving credits, जहाँ पे फर्म के लिए एक जो रिजर्व है इट इज़ अवेलेबल टू बी बोरोड एट एनी टाइम, उसमें कुछ बैलेंस फर्म बोरो कर लेती है और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके अगेंस्ट एक कमिटमेंट फी फर्म को पे करना पड़ती है. सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल हियर. फॉर द सेम एग्जांपल, a $1 million revolving credit at 10% stated interest rate for 1 year. Borrowing for the year was $600,000. So out of 1 million, firm ने जो borrow की amount during the year, it was $600,000. A required 5% compensating balance on borrowed funds. और जो funds उसने borrow किए उसके against a compensating balance जो है that must be maintained at 5%. And also a 0.5% commitment fee on 400,000 of unused credit. If you look at the total setup, out of $1 million that were created for the disposal of funds, disposal of financing for the firm, उसमें firm ने जो borrow किया that is $600,000 और जो unused balance पड़ा हुआ है that is $400,000. अब बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने $400,000 जो हैं वो रिजर्व रखे हुए हैं इस फर्म के लिए कि जब भी फर्म डिमांड करे ड्यूरिंग द ईयर उसको वो लोन में ट्रांसफ़र किया जाए. और जो भी बैलेंस फर्म ने लोन लिया उसके अगेंस्ट एक 5% का कंपनसेटिंग बैलेंस जो है वो भी बैंक अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन दिस सिचुएशन? सो लेट्स सी हियर the interest. So you can calculate interest for
the borrowing of $600,000 at a rate of 10%. It will be $60,000. And commitment fee, the remaining balance of $400,000 which is not used, a commitment fee of 0.5% will be paid for that. So if we calculate it, it will make about $2,000. And then compensating balance, it is a 5% of the loaned amount. अब लोन अमाउंट क्या है? That is $600,000 जो उसने अवेल किया है. And a compensating balance of 5% will be maintained in the bank, and it will make $30,000. And usable funds, if we look into here, the usable fund is equal to the total amount borrowed minus the compensating balance. जो उसमें से compensating balance में 5% गया, that is not used by the firm, so it will be reduced with that compensating balance, which is $30,000. So you can see here the usable fund is $570,000. So now our calculation will be based on this usable funds कि इसके against हमने कितना cost pay किया. So here you can see the interest, this is the one of the expense paid, and the commitment fee that is paid, and it will be divided by the usable funds to determine the effective cost of borrowing. So you can see here the interest paid is $60,000 plus commitment fee paid is $2,000 divided by $570,000 multiply with 100 to get a percentage rate here. So we can calculate it, 62,000 divided by 570,000 and multiply it with 100 to get a percentage rate. It is 10.877, or we can round it off to 10.88%. So this is the effective cost of borrowing. Instead of a rate of 10%, the firm will be paying 10.88%. And then the effective annual rate of interest, we can calculate it using this arrangement also. That is the total interest paid. We can generalize it into a formula, and then total fee paid in the form of commitment fee and the used funds, and for how many days firm have used these funds. So उसके साथ अगर हम इसको divide करेंगे, तो then we will get a rate for 1 day, and then if we multiply it with 365 days, we get a rate for the full 1 year. So for this example, how to use this formula, we assume this example here. Assume that same loan, that is $1 million described on the previous slides, except that the loan is for 270 days. That loan was for 1 year. अब इसमें changing क्या आई है? The loan is for 270 days, not for the whole 1 year. And then the rate is 10% on annual basis. अब उसमें हमने effective annual rate calculate किया था, that was 10.88% on the borrowed funds. But here there is a difference that कि अब borrowed fund के ऊपर rate जो है that is given as 10% instead of 10.88%. This is the effective rate for 270 days. So what is the effective annual rate? We have to calculate the effective annual rate because हमारे पास जो given rate है that is for 270 days, which is 10%. Now let's see how we calculate it. This figure here represents the interest expense. And how do we calculate it? So we can calculate it
that the amount of fund which was used, it is 600,000, and the effective rate for 270 days is 10%, and we have to analyze it for the 1 year. So how do we analyze it? That divide it with 270, because this is the rate for 270 days, to get a rate for 1 day, and then we multiply it 300 with 365 to calculate the rate for full 1 year. And when we solve this equation, we get an interest expense for the period equal to $44,384. So this is the interest rate, this is the amount of interest or the interest expense the firm will pay, and $2,000 in the commitment fee. As you know, there was a balance of 400,000 available for the firm, but the firm did not use that, and a commitment fee of 0.5% was paid on to that, and this expense makes it $2,000. And when we put these figures into the formula, we calculated for the full 1 year the effective annual rate. So this is an interest expense for the 270 days, and this is the amount of commitment fee we paid, and this is the funds effectively used during this period. And then we divide it with 270 because we have this arrangement for 270 days, and to get an effective annual rate for full 1 year, we divide it with 270 to get it for 1 day, and we multiply it with 365 to get it for full 1 year, so we can get it equal to 11%. So in this example, our effective annual rate is equal to 11% instead of 10%. And then we come to the topic that is the secured loan. हमने पिछले लेक्चर में unsecured loans को डिस्कस किया था, and now we'll look at the secured loans, how the loans they are secured and why the loans they are secured. जब फर्म के पास जब फाइनेंसिंग की ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, so in that case firm would contact the bank, financial institutions, or sometimes the money market. So and then based on the credibility of the firm or rating of the firm, उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल करेंगे those institutions with the financing institutions, so that will depend on the credibility as we mentioned, and this credibility will be added using different securities. अब जिस फर्म की credibility already है, established है, उसके साथ securities ऐड नहीं की जाएंगी, that the loans will be forwarded without any security, or we call it unsecured loans. लेकिन लोन्स को सिक्योर करने के लिए अगर फर्म के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो देन वी ऐड सम सिक्योरिटीज टू मेक द लोन सिक्योर्ड. सो हियर वी कैन यूज डिफरेंट ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, collateral option. The first security we use as a collateral. It is an asset pledged by a borrower to ensure repayment of a loan. अब अगर फर्म लोन लेती है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके अगेंस्ट कोई एसेट अगर प्लेज किया जाता है टू मेक श्योर कि अगर फर्म डिफॉल्ट करे, तो आउट ऑफ दैट प्लेज्ड एसेट द अमाउंट विल बी रिकवर्ड. एंड इफ द borrower defaults, the lender may sell the security to pay off the loan. Excess of market value of security pledged over the loan amount determines the margin of safety. अब कोलेटरल की वैल्यू कितनी है अगेंस्ट दैट फाइनेंसिंग. फॉर एग्जांपल, अगर फाइनेंसिंग की अमाउंट है $90,000 और जो कोलेटरल जो प्लेज की गई है उसकी वैल्यू है $100,000, सो देयर इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ $10,000. सो इन दैट केस जो फाइनेंसिंग फर्म हैं, जो बैंक हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी विद द कोलेटरल. और कोलेटरल की वैल्यू जो है उसको किस तरह से रैंक किया जाता है, हाउ इट इज डिटरमाइंड, आर द फैक्टर्स upon which the value of collateral depends. One is marketability, कि जो एसेट प्लेज किया गया है मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, कैन इट बी सोल्ड इजीली और इज देयर एनी प्रॉब्लम विद इट.
तो it will determine the value of the collateral. जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी collateral की जितनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, that it is better for the financing firm or the bank. And also the cash flow life. अब जो collateralized asset है, जो asset pledge किया गया है, उसके साथ जो cash inflows attached हैं, for example अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको प्लेज किया गया है, तो उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसके साथ इन कैश इनफ्लोज जो है वो अटैच्ड हैं. दैट प्लांट विल अर्न समथिंग. तो अगर उसका कैश फ्लोज जो हैं दे आर मोर देन द लोन्स, देन इट इज़ गुड फॉर द कोलैटरल. एंड आल्सो द रिस्कीनेस. अब जो एसेट प्लेज किया गया है, जो कोलैटरल है, उसकी नेचर ऐसी है कि उसकी प्राइस जो है इट फ्लक्चुएट्स इन द मार्केट so heavily कि at some times it reaches to good levels where the banks or the financial institutions they feel comfortable, but at the same time because of any reason or sometimes without any reason उसकी price जो है वो it goes even below that financing amount. So in that case that collateral is not good. So the lesser the riskier collateral is, it is better for the financing firms or the banks. And there are different assets that can be pledged to get financing from the financial institutions and the banks. So one of the example is accounts receivables. The firms, they can use their accounts receivable balance to pledge and to get short-term financing. अब इसमें क्या होता है? So one of the most liquid assets account of the firm, account receivable, as we know, these are the most liquid assets of a firm. Normally the accounts receivable, they are converted into cash within 30 days or at max 60 days, and anything that goes beyond these the credit periods is highly doubtful. There is a high risk these accounts receivable, they might be converted or they may go into the bad debt losses. And next is the loans by commercial banks or financing companies. इसमें firms ने decide करना है कि from where to take loans and against the accounts receivable, whether to take loans from a commercial bank or financing companies. So here the banks, they offer lower interest rates than the financing companies. So banks, they are the better option here. And now the loans evaluations are made on different characteristics of the pledged property. Here accounts receivables are the pledged assets. So here we look into the quality of the accounts receivable. The financing companies and the banks, they will be quite interested to look into the quality and the size of the accounts receivable. And quality would mean कि account receivable की जो age है, that is not more than the given credit term. अगर accounts receivable की जो credit period है, that is 30 days, और उसमें जो accounts they go beyond 30 days, it means there is a risk attached to it. There is a chance कि ये जो accounts हैं, they are going beyond the given credit limit, वो bad debt losses में convert हो सकते हैं. So those type of accounts will be segregated from the pledged accounts receivable. And then the size of accounts receivable, when there are different sizes of accounts receivable available in the total composition of the accounts receivable. Some are very small, some are very big. So the handling of all types of accounts receivable would require a lot of time. और अगर जो financing firm हैं, they will prefer to have larger accounts receivables instead of smaller accounts receivables. The small accounts may be rejected as being too costly per dollar of loan to handle by the institution, because the handling have a cost. There is time involved, there is labor involved in it. So these small accounts, they will not be taken into evaluation. Only the large receivable accounts, they will be evaluated. And then types of receivable loan arrangements. First of all, non-notification, and then there is notification. So the non-notification types of receivable loan arrangement, it means that firm customers are not notified that their accounts have been pledged to the lender. The firm forwards all payments from pledged accounts to the lender. Under this arrangement, the firm doesn't inform the customers
or the account holders in the form of accounts receivable, these accounts receivable, they have been pledged to the bank or any financial institution, and against these accounts receivable firm ने कोई financing ली है. It is not conveyed to the clients, to the accounts receivable firms. So here the idea is the firm will receive the cash from these accounts and then transfers it to the bank or the financial institution. And then there are certain types of accounts where the customers, they are notified that their accounts receivables, they have been pledged for short-term financing, or those accounts, those customers, they are instructed to pay their balances to that bank or financial institution जिससे firm ने finance short-term borrowing की है. So this is an arrangement of notification. We call it a notification arrangement. And then the next topic, it is the inventory backed loans. हमने पहले accounts receivable backed loans को discuss किया. Then the other type of secured loan is inventory backed loans. Here the loans, they are secured using the inventory of the firm. So here जो banks और financial institution है उनका concern किस चीज़ से है? The type of inventory, the quality of the inventory and the handling of that inventory by the firm. अब उसमें the loan evaluations, they are made on the marketability. अब inventory की type क्या है? How liquid is that inventory? अगर firm default करती है तो जो property, जो inventory उसके against pledged है उसको market में easily sell किया जा सकता है या नहीं? So that will determine marketability of that inventory. And then perishability, कि जो inventory pledge की जा रही है, that is going to be perished in small time period or it is for some longer time period. And then price stability, और इस inventory की price movement जो है वो कैसी है? Is there any risk involved in it or the price movement is constant? So the price stability is again a very important variable here. And the difficulty and expense of selling for loan satisfaction, and how easily the firm can liquidate this type of inventory to recover its loans. So इसमें अगर firm के जो inventory pledge की गई है उसको easily sell नहीं किया जा सकता. For example, अगर firm का जो business operations हैं they are quite different from other firms, तो उसके अंदर अगर उसके clients बहुत थोड़े हैं तो in that case it will not be easy for that inventory to be sold into the market. इसकी एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी प्लेज की गई है उसका नंबर जो है that is for related to some other part of the country. For example, if we live in Islamabad and we have to sell a car in Islamabad which is registered in any far area, let's say Mardan, so in that case it is not easier for that inventory to be sold quickly. And also the cash flow ability, और इसके साथ जो firm जो inventory है उसकी cash flow ability क्या है? The inventory can be utilized to have some cash inflows by the firm or not. अगर उसकी जो cash inflows जो हैं that is not maintained or they are not regular, so in that case it is not a good property to be pledged. And then types of inventory backed loans, there are floating liens. Here अब हमने जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है या बैंक है वो इन्वेंट्री टाइप से और किस तरह से उसको पोजेशन उसने किस तरह से देखना है और इन्वेंट्री की हैंडलिंग जो है दैट विल बी मॉनिटर्ड. फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की है एंड इट इज़ अगेंस्ट द इन्वेंट्री हैज़ बीन प्लेज्ड, तो अब इन्वेंट्री जो प्लेज की गई है दैट मे बी स्पेसिफाइड or it may not be specified, and if it is specified then the movement of that inventory has to be monitored. और अगर इसको specify नहीं किया गया, in that case it may be concerned over an overall level of inventory. So here floating lien, it is a general or blanket lien against a group of assets such as inventory or receivables.
without the asset being specifically identified. अब इस अरेंजमेंट में, जिसको हम फ्लोटिंग लीन कहते हैं, इसमें जो इन्वेंट्री प्लेज की गई है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, और इट इज़ again against an overall level of inventory, or it may be against an overall level of accounts receivables. And then there is another kind, we call it as chattel mortgage. Here a lien on specifically identified inventory by serial number or some other means, and the inventory can only be sold with the lender's consent. The arrangement is not suitable with rapid turnover and not easily identifiable. अब हमने जो inventory, do keep in mind कि inventory also includes the finished goods and the raw materials and work in process inventory. So all this type of inventory is discussed here, and particularly the finished goods inventory is more suitable for this type of transactions. And under this arrangement of chattel mortgage, let's suppose के फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री के अगेंस्ट एक फाइनेंसिंग की ट्रांजैक्शन हुई है, एंड ऑल द फिनिश्ड गुड्स दे आर टैग्ड विद सर्टेन नंबर्स. यू कैन आइडेंटिफाई दोज फिनिश्ड गुड्स यूजिंग दोज नंबर्स. अब ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं दे विल बी सोल्ड इनटू द मार्केट, बट अ प्रायर कंसेंट फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड हियर. So the inventory can only be sold with the consent of the bank. So this arrangement is called chattel mortgage, and this arrangement is not suitable with rapid turnover and not easily identifiable inventory. अगर inventory का turnover ज़्यादा है, inventory is replaced quickly with the new inventory, so in that case it will be difficult to seek consent every time from the bank or the financial institution and then sell it in the good into the market. And also, और अगर उसमें items की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, then again it will be difficult to identify the items according to their identifications. And then the trust receipt. It is again an arrangement of inventory backed loan. So here a security device acknowledging that the borrower holds specifically identified inventory and proceeds from its sale is interest for the lender, particularly useful for the automobile dealers, equipment dealers and consumer durable goods dealer here. अब इस arrangement में क्या है कि suppose कि there is an automobile dealer. अब automobile dealer को गाड़ियाँ अगर बेचनी हैं तो to procure those cars it has to pay a good amount of investment, a good amount of cost is involved in this transaction here. अब ऑटोमोबाइल डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से गाड़ियाँ लेगा और कस्टमर्स को वो सेल करेगा, लेकिन जब पेमेंट करनी होगी उसने, so then a bank is involved here, or that financial company will make payment to the manufacturer, and then those goods, those cars will be shipped to the dealer, and then these goods they are tagged with specifically identifiable numbers, or the sale proceeds of each of these cars are transferred to the financing company. अब इसमें फाइनेंसिंग कंपनी ने ये मॉनिटर करना है कि the sale proceeds they are timely and regularly remitted to the financing company's account, and to check out there can be different arrangements. For example, in the next transaction, the next arrangement we see here, it is called terminal warehouse receipt. So this is, in this arrangement, a receipt for the deposit of goods in a public warehouse that a lender holds as a collateral for a loan. अब जो प्रॉपर्टी या जो फिनिश्ड आइटम या जो गुड्स फर्म ने सेल करनी है, they are shipped to a separate place that is called terminal warehouse, and in that warehouse all the items they are tagged with identifiable numbers. अब उसमें से जो भी आइटम सेल होगी that will be with the consent of the bank or the financing company. So just like that, in that kind of trust receipt, in case of trust receipt, जो भी कार सेल होगी that will be
रिकॉर्डेड, और उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जा सकता है और बैंक उसको रेगुलरली चेक करता रहेगा। और इसी तरह से टर्मिनल वेयर हाउस रिसीट अरेंजमेंट में जो भी आइटम्स, जो फिनिश्ड आइटम्स जो प्लेज की गई हैं, द फिनिश्ड गुड आइटम्स, उनके अगेंस्ट जो भी रिसीट्स आएंगी फर्म को, उनके लिए सबसे पहले सेल के लिए कंसेंट देगी दैट फाइनेंसिंग फर्म या बैंक, और उसके बाद उनके सेल प्रोसीड्स जो हैं उनको बैंक या फाइनेंसिंग फर्म के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, एंड द बैंक or the financing company will be regularly monitoring this whole process. And another arrangement is called field warehouse receipt. So in this arrangement, a receipt of goods segregated and stored on the borrower's premises, but under the control of an independent warehousing company that a lender holds as collateral for a loan. अब इस arrangement में द फर्म जिसने प्लेज किया है अपने इन्वेंट्रीज को, लेट्स सपोज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री को, सो दोज फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्रीज they are separated and segregated, and they are identified with certain identification numbers, and they are put into a separate place in the premises of that firm. और उसको monitor और उसको arrange करने के लिए there is a separate firm, and that firm will make sure कि whatever transaction takes place against that pledged inventory, the receipts will go to the bank or the financial institution जहां से short term borrowing की गई है. So this arrangement is known as field warehouse receipts. And then factoring accounts receivable. As you know, the selling of receivables to a financial institution recognized as the factor in the situation. हम जो accounts receivable हैं किसी भी फर्म के, अगर उनको सेल कर दिया जाए टू एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी सब्सिडरी ऑफ द बैंक, सो दैट परचेजिंग एंटिटी, द बैंक, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम उसको फैक्टर कहेंगे इन दिस सिचुएशन. एंड द फैक्टर इज ऑफन अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंक होल्डिंग कंपनी, and factor maintains a credit department and performs credit checks on accounts. Then the factor would check the nature of the accounts, कि उनकी credibility क्या है, if the risk is involved in the accounts receivable or not, or then the accounts receivables जिनके साथ risk associated होगा, they will not be purchased, they will be separated, and allows firm to eliminate their credit department and the associated costs. अब इसमें firm के लिए एक और advantage क्या है कि firm को अपने receivables के लिए एक separate process जो है वो run नहीं करना पड़ता. It means the firm would require lesser labor, and also the time involved is not there. So that separate firm will, the financing firm will establish a credit department, and the associated cost is also the responsibility of that financing firm. And the contracts are usually for 1 year but are renewable. और इसके अंदर जो contracts होंगे they are for 1 year, and after 1 year again based on different financial strengths and weaknesses of the firm they will be renewed, और उसके अंदर terms and conditions जो हैं उनको भी accordingly change किया जाएगा. Now we look into the factoring cost. What are the costs they are involved here in this whole process? The factor, the bank or the subsidiary of that banking company, they will receive a commission on the face value of the receivables. It typically ranges from less than 1% to a maximum of 3%. It depends all on the situation of the risk associated with this whole transaction and the labor involved into it, and the cash payment is usually made on the actual or average due date of the receivable. अब इसमें जो फर्म है उसको रिसीवेबल्स के अगेंस्ट उसके टाइम के मुताबिक कैश रिसीव होगा. फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स रिसीवेबल का टाइम है नेट 30 डेज, तो जो बैंक है या फाइनेंशियल कंपनी है जो इसको जो फैक्टर है जो इस सारे प्रोसेस को अरेंज करेगा, इट विल कलेक्ट द पेमेंट्स फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, एंड देन ऑन द ड्यू डेट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द फर्म. एंड देन इन द फैक्टर, if the factor advances money to the firm, then the firm must pay interest on the advance.
और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि फर्म को कैश रिक्वायर्ड है और अकाउंट रिसीवेबल में अभी टाइम बाकी है. फॉर एग्जांपल, if there is a time of 30 days to realize any cash receipt from the account receivable and the firm needs short-term financing at this moment, तो फर्म उसके रिसीवेबल्स के अगेंस्ट एडवांस की रिक्वेस्ट कर सकती है फ्रॉम दैट फैक्टर. अब फैक्टर उसको जो भी कैश प्रोवाइड करेगा उसके अगेंस्ट फॉर द गिवन नंबर ऑफ डेज इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर फर्म को ऑन 10th डे एक $100,000 की ज़रूरत है, तो इन दैट केस देर इज स्टिल 20 डेज लेफ्ट कि जब फर्म को $100,000 की पेमेंट रिसीव होनी थी. सो फॉर दीज 20 डेज फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टूवर्ड्स द फैक्टर, एंड द टोटल कास्ट ऑफ फैक्टरिंग इज कंपोज्ड ऑफ फैक्टरिंग फी प्लस एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन एनी कैश एडवांस. तो अब जो भी कैश एडवांस फर्म वसूल करेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा प्लस द फी दैट विल बी पेड टू द फैक्टर. And although expensive, it provides the firm with substantial flexibility. ये अरेंजमेंट ये एक्सपेंसिव तो हो सकता है, लेकिन इसमें फर्म के पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, फर्म को जब भी कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो अकाउंट रिसीवेबल already are with the factor, so the factor is not worried about the risk involved into that advance cash required by the firm. अब फैक्टर को चूंकि कैश रिसीव हो जाएगा फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल और फैक्टर अकाउंट्स उसको फर्म को जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कैश एडवांस में दे देगा, प्लस उसके ऊपर जो टैक्स जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो चार्ज कर लेगा, और इसके साथ जो फी है दैट विल आल्सो बी पेड. द कंपोजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इसको किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे कि व्हाट कंपोजिशन इज सूटेबल फॉर द फाइनेंसिंग यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज. सो द बेस्ट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन द कास्ट ऑफ फाइनेंसिंग मेथड, के डिफरेंट फाइनेंसिंग मेथड्स को यूज करके जो मिनिमम कास्ट हम डिराइव कर सकते हैं दैट हैज टू बी पेड, दैट इज द बेस्ट वन. एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और कहाँ किन किन सोर्सेज से कितना कितना फंड अवेलेबल है. सो इट विल बी एडवाइजेबल to choose the source where the cost is minimum, and the timing, और उसके साथ timing of the mix is also very much important. फर्म को कब और कितना फाइनेंसिंग चाहिए दैट इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, फर्म को अपने ऑपरेशंस को जो समटाइम्स इन द सीजनल पीक्स विच आर जो सप्लाईज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, या इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल रिपेयर जो फर्म को ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इन दैट केस फर्म को अपने सोर्सेज के साथ किस तरह से निगोशिएट करना है और रेडीली कैश को कैसे अवेलेबल करना है एट अ मिनिमम कास्ट, that also determine the mix of short-term financing. And the flexibility, how easily firm can arrange those financing. The best one was the spontaneous financing. There is the maximum convenience and the flexibility, and then degree to which assets are encumbered. और उसके अलावा आपके एसेट जो है how they are committed in different kinds of arrangements. आपने जो अपने एसेट्स को प्लेज किया है, फॉर एग्जांपल how much you are pledged into that, how easily the firm can pay back the financing, or is it good for the firm to pledge certain type of resources or the inventories or the assets, or it is not. Based on this decisions the firm would go for a financing mix and will make sure कि उसको कास्ट मिनिमम पे करना पड़े, उसके ऑपरेशंस इंटरप्ट ना हो, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस जो है दैट शुड बी इंक्रीज्ड, और उसके साथ जो एसोसिएटेड क्रेडिट्स हैं दैट शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड. एंड एट द सेम टाइम फर्म को अपने बिजनेस ऑपरेशन साइकिल जो हैं उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उनकी जो फर्म की लिंक्स हैं विद डिफरेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस उसको किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, एंड एट द सेम टाइम द फर्म हैज़ टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज, एंड देन विल नॉट अलाउ इट्स reputation to go bad among all these players. So it is this is known as the composition of short-term financing. And in today's lecture we discussed
the negotiated financing. The one of the part we discussed in our previous lecture, that was about unsecured loans, and in this section, in this lecture, we discussed the secured part of the financing, that is the secured loans against the accounts receivables, against the inventories, and also the factoring of accounts receivable, that is using selling the accounts receivable to third parties. And also we determined how to calculate the effective annual interest rate on short-term borrowing with or without a compensating balance requirement and or a commitment fee. इसके अलावा हमने अपना जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसकी कैलकुलेशंस हमने की कि यूजिंग under the given circumstances, given the interest rate, what other factors they contribute towards the calculation of effective annual interest rate. उसके अंदर जो है वो collect basis and discount basis and बाकी उसमें जो commitment fee है, based on that decisions or this type of conditions हमने effective annual rate जो है वो calculate किया. इसके अलावा secured और asset based loans, हमने जो loans हैं उनको discuss किया, pledging them with different types of assets, and also we understand what is meant by factoring accounts receivable or what is best financing mix and how do we determine that. So this is all for our today's lecture, and inshallah we'll see you in the next lecture. Till then, Assalamu alaikum.